Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's session, we'll be taking care of the important questions or important topics for your upcoming board examination. And in this session, हम जो chapter लेने जा रहे हैं, that's my people, system of particles and rotational motion. और अगर हम बेटा इस चैप्टर के वेटेज की बात करेंगे एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, इसमें इससे आपको बेटा 6 मार्क्स पूछे जाएंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन. The first question or the first topic which we are going to take care of, that's my dear center of mass. यहां पे बेटा हम सेंटर ऑफ मास को बहुत ज्यादा डिटेल में लेने वाले नहीं हैं. हम सिर्फ बेटा इसको लेंगे कि जितना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है. When we talk about the center of mass of the rigid body या the center of mass of the system of particles, अगर आपके पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस पेन, और मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस पेन के लिए एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जहां पे हम मानेंगे कि इस पेन का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है. देन दैट पॉइंट एक्चुअली वेयर वी assume that the whole mass of the system is supposed to be concentrated, that point is actually called center of mass. So I am having the definition here. It is a hypothetical point at which total mass of the system is supposed to be concentrated. फिर कभी कभार हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, why the concept of center of mass, why we need the concept of center of mass? Then the simple explanation is कि अगर हम बेटा एक ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करेंगे, when it is the extended object, means you cannot ignore the size of the object. For example, यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, have a look my people. अगर इस डायग्राम को देखेंगे, जहां पे एक बंदा जो है इस ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ओरिएंटेशन वगैरह कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. और वी कैन से इट वोंट बी इजी टू डील विद द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. या जब आप इस ऑब्जेक्ट की मोशन की मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे या इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स की मोशन को एनालाइज करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द इजी टास्क. लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास देखेंगे, जिसको यहां पे बेटा हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट फॉलोइंग द पैराबोलिक path. And everybody knows from the projectile motion how to deal with the particle or projectile which is following the parabolic path. So I can have a point here. The motion of the object can be highly complicated, but the motion of the center of mass is always decent or simple. या अगर मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा बेटा, आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है. अगर मैं इसको हवा में फेंकूंगा, इफ माय इंटेंशन विल बी ये कुछ यूं ऊपर जाए, बट यू विल सी इन एयर इट विल बी डूइंग दिस एंड ऑल दैट. या इन सिंपल टर्मिनोलॉजी, इसकी जो मोशन है वो सिंपल होने वाली नहीं है. बट माय डियर, अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे एक एलईडी लगाया जाए और पूरा इसको डार्क बनाया जाए, देन इफ यू विल थ्रो द ऑब्जेक्ट, if you will throw the mobile, the motion of the mobile will be highly complicated, but center of mass will be just going up and coming down. So that is just like a motion under gravity, and you know each and everything. When it comes, you throw the object in the upward direction, then the object goes up, it comes down and all that. So simple terminology, may a simple explanation or reason that why we need the concept of center of mass, वो ये है बेटा कि जो system है या system of particles है या rigid body है, उसकी motion complicated हो सकती है, but the center of mass always moves in a decent way or in a simple way. आगे बढ़ते हैं बेटा. Then we are having certain points regarding the center of mass, जहां से आपको कोई MCQ question पूछा जा सकता है. What is that? For symmetrical bodies having homogeneous mass distribution, center of mass coincides with the geometric center.
अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल बॉडी है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल बॉडी? जिसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, जिसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है. व्हेन आई एम सेइंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट्स अ हाइपोथेटिकल एक्सिस, इट्स अ हाइपोथेटिकल लाइन जो एक बॉडी को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे. अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, यू आर हैविंग द सर्कल हियर, इट इज टिपिकली symmetric about the, we can say, x-axis, symmetric about the y-axis, and not only the symmetric, the mass distribution should be homogeneous or uniform. सपोज अगर हम रॉड की बात करेंगे, व्हेन आई एम सेइंग द यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है दैट शुड बी सेम थ्रू आउट. इफ यू डील विद सम शीट और द 2D configuration, then homogeneous और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मींस मास पर यूनिट एरिया जो है वो सेम होना चाहिए, so on and so forth. So my dear, जब आप डील करेंगे उन बॉडीज के साथ, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जहां पे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं व्हेन इट कम्स द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उन बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास जो है दैट कोइंसाइड्स विद द जियोमेट्रिक सेंटर. एज एन एग्जांपल, अगर एक सर्कुलर प्लेट की बात करेंगे, it coincides with the geometric center. I am having the rectangular plate, I am having the triangular mass distribution, like you're having the pentagon, the hexagon and octagon and all that. Not only that, अगर हम एक rod की बात करेंगे where the mass distribution is uniform, तो फिर आपका center of mass जो है that coincides with the geometric center, yeah, it will be at a distance of L/2 from one of its ends. All right, next point की अगर हम बात करेंगे, now if the mass distribution is non-uniform, then center of mass को देखने का सिंपल तरीका होगा, it will be lying in the region of greater mass. अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, have a look my people, मैंने यहाँ पे क्रिकेट बैट लिया है. अगर क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो यहाँ से ये बारी है और यहाँ से ये हल्का है बेटा. the center of mass, अगर मैं इसके geometric center की बात करूंगा, that will be somewhere here, this will be the GC, where GC stands for the geometric center, या midpoint भी अगर मैं बोलना चाहूंगा. लेकिन अगर center of mass की बात करेंगे, that will lie in the region of greater mass, maybe somewhere here. So this will be the COM, the center of mass for you people. Likewise, अगर मैं इस हैमर की बात करूंगा, यहां से आपका आयरन का कंपोनेंट है which is heavier in comparison to this wooden handle. तो यहां पे अगर मिड पॉइंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द टोटल और द इफेक्टिव लेंथ, ये आपका होगा जियोमेट्रिक सेंटर, दिस इज द जियोमेट्रिक सेंटर, बट द सेंटर ऑफ मास विल बी close to the region of heavier mass. Maybe या तो यहाँ पे, या तो even there's a possibility it will lie within this iron component. So the conclusion is simple. While dealing with the non-uniform mass distribution, center of mass जो है that lies in the region of greater mass. And the next point for we people is there may or may not be any mass present physically at the center of mass. जिसमें आपकी typical example है, अगर हम ring की बात करेंगे, अगर हम इसी तरह hollow sphere की बात करेंगे, while dealing with the ring or hollow sphere, अगर आप बेटा उसका देखना चाहेंगे center of mass, suppose ये हमारे पास एक ring है या hollow sphere है, if you talk about it is center of mass, that also coincides with the geometric center. But the good thing is that, yeah, some different thing is that कि इस पॉइंट पे फिजिकली कोई मास नहीं है. सो रिमेंबर, जरूरी नहीं है जहां पे एक बॉडी का, एक सिस्टम का, एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे फिजिकली मास प्रेजेंट हो. इट मे बी देयर और इट मे नॉट. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी हैव अ सिचुएशन. यहां पे एक मास है हमारे पास बेटा, इट्स माय डियर m1, और इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे दैट्स x1, y1, वी विल से द z1. लाइकवाइज यहां पे और एक मास लेना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मास, वी विल से द m2, और इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट्स और x2, y2
and I will say the Z2. And let me generalize it up to, we will say the Mn with the coordinates, that's my dear xn, yn, zn. अब हमें क्या करना है बेटा? हमें इस सिस्टम का ढूंढना है सेंटर ऑफ मास. और आपके एग्जाम में या तो 2 पार्टिकल सिस्टम पूछा जा सकता है या बेटा 3 पार्टिकल सिस्टम, so on and so forth. My dear, we have to go for the center of mass. And हमने अभी देखा बेटा, या already you know it very well, center of mass is just a point. और point को एक बेहतरीन तरीका ढूंढने का है कि उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढें. आई एम रिपीटिंग, व्हाट्स द टारगेट, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज हमें इस सिस्टम का, द सिस्टम कंटेनिंग n पार्टिकल्स और n कंपोनेंट्स, हमें इसका ढूंढना है सेंटर ऑफ मास. तो हमने बोला सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट. तो पॉइंट को ढूंढने का एक तरीका है, वन ऑफ द वे, वन ऑफ द मेथड, एक पॉइंट को ढूंढने का है, दैट इज हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखें. तो इफ यू टॉक अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, xcm, इट्स गिवन बाय m1x1 plus m2x2 plus it will go up to m3x3 so on to mnxn divided by every time you will be having the total mass of the system in the denominator. That will be actually m1 plus m2 plus m3 and so on to mn. Likewise, if you talk about ycm, y coordinate of center of mass, the formula for V people is m1y1 plus I will go with m2y2 plus so on divided by total mass of the system. Likewise, अगर कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी, normally हमें जरूरत नहीं पड़ती है, if you want to take care of, if you want to know the ZCM, Z coordinate of center of mass, then the formula for V people is m1z1 plus m2z2 plus so on divided by, we are quite happy and comfortable with the total mass. तो my dear, जब भी आपको center of mass ढूंढना होगा, चाहे आपके पास होगा 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 एंड सो ऑन n पार्टिकल सिस्टम, ये 3 रिजल्ट्स आपको जहन में रखने होंगे. टू मेक इट मोर क्लियर एंड स्ट्रांग, लेट मी हैव एन एग्जांपल. 2 particles 10 kilogram and 20 kilogram are placed at 1, 0, 2 and 0, 1, 0. Find the coordinates of center of mass. My dear, simply एक substitution problem है, values हमें put करने हैं. अगर हम देखेंगे पहले xcm, if you want to take care of xcm, हमने अभी formula देखा for the x coordinate of center of mass, the result goes like this: m1x1 plus m2x2 divided by, it is total mass of the system, that will be m1 plus m2. चलिए बेटा values को put किया जाए. For example 10 किलोग्राम हमारे लिए m1 है, so it's my dear 10 into इसका x1, x coordinate that is given as the 1 plus दूसरा पार्टिकल आपके लिए 20 है, उसका x coordinate आपको जो है that's my dear 0 divided by the total mass, that is 10 plus 20, that will be simply, I will say the 30. इसको simplify किया जाए, 10 into 1 is 10, 10 into 1 is 10, 20 into 0 is 0, divided by 30, you will end with the answer 1 upon 3. Yeah, if you are in the SI units, it is 1 by 3 meters, or I think that is 0.33 meters. Okay. इसी तरह अगर आप इस सिस्टम के YCM की बात करेंगे, Y coordinate of center of mass, the formula is m1y1. m1 की जगह 10, y1 is my people 0 plus m2y2, m2 की जगह 20. y2 की बात करेंगे, the y2 is my dear 1 divided by the total mass. Total mass की बात की जाए तो 10 plus 20 आएगा. What is that, my dear? 30. What is the answer? It is 0, 20 into 1 is 20, divided by 30, it is 20 upon 30. Yeah, you will end with, it is simply the 2 upon 3. Likewise, अगर बात की जाए बेटा ZCM की, Z coordinate of the center of mass. अगर Z coordinate को देखा जाए, the formula is m1z1, it is 10, और उसका Z coordinate जो है, that's my dear 2 plus m2, that is 20 kilogram, और उसका Z coordinate जो है वो 0 है, divided by the total mass is 30 again.
2 into 10 is 20 upon 30. So you will end with the answer. That's, my dear, 2 upon 3. So these are the coordinates of the center of mass. Next example I want to take care of. Two particles, m and 2m, are placed at a distance 1 meter from each other. Find the distance of the center of mass from m. कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूलाज यही है, बट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंटली दी गई है, बट नो नीड टू वरी एट ऑल. सो इफ आई ड्रॉ द फिजिकल सिचुएशन, ये मेरे पास एक पार्टिकल, ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल, इसका मास m और इसका मास जो है दैट्स माय डियर 2m. जब आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, आप एक मास को लेंगे at origin. Suppose मैं m को लूंगा बेटा at origin, then for v people this will be the positive x-axis and likewise this will be the y. Even I don't think there's a requirement of the z-axis in this case, but still if you want to draw there is no problem. ये अपनी बेटा z-axis है. अब यहाँ पे आओ, the distance between the two masses that is given as the 1 meter. ये वाला पार्टिकल अगर आप देखेंगे it lies at the origin, so we are quite happy and comfortable with the coordinates are 0, 0, 0. The point lies on the x-axis, so y and z coordinate will be 0. और अगर x coordinate की बात करेंगे तो ये distance है that's 1 meter, so the coordinates will be 1, 0, 0. Now I think the game is over. You know the two masses, you know the coordinates, you can take care of the center of mass. If you want to go for the axiom, अगर x coordinate of center of mass की बात की जाए, the formula is m1 x1. ये आपका mass है बेटा m और x coordinate उसका जो है वो 0 है. Likewise the another particle is having the mass of 2m और उसका जो x coordinate है that's my dear 1. और अगर बेटा total mass की बात करेंगे m plus 2m, that is my dear 3m. If you want to go with the final answer axiom, it will be the 2m here, it will be the 3m here. I can say bye bye to m and m. You will end with the answer 2 upon 3, which is same as 0.66 meters. So हमें बोला गया था find the distance of center of mass from the mass m. आप देख सकते हैं the center of mass is at a distance of 0.66 meters. If this is the midpoint, then the center of mass is maybe somewhere here. तो ये आपका बेटा center of mass है at a distance of 0.66 meters from the m, from the origin. And अगर आपको distance from the 2m भी चाहिए, that will be 1 minus 0.66, that is 0.33 or 0.34. और यहाँ से और एक बात clear हो रही है, you are having the m, you are having the 2m, the center of mass is close to the heavier mass. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Next question please. Three identical particles, each of mass m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side length d. Find the center of mass of this system. Now it's a three particle system. Have a look my dear. The three particles are at the corners of an equilateral triangle. So what I'm going to do, मैं पहले यहाँ पे एक triangle बनाने की कोशिश करूँगा. ध्यान दीजिएगा बेटा. All right, one of the particle here, there is one more and there is one more. अब मैंने अभी बोला बेटा, अगर coordinates आपको directly नहीं दिए जाते हैं, then what will be the approach? एक particle, एक mass को हम लेंगे origin पे, and that is always the matter of choice. For example, हम इसको बेटा origin बनाएंगे, then this will be the positive x-axis and this will be the पॉजिटिव y. अब यहां पे आइए, दे आर आइडेंटिकल. बाय द वे, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना होगा इन सिंपल वे या इन प्रिसाइज वे, तो तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स है. सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली एट दिस ज्योमेट्रिक सेंटर विच विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंट्रॉइड्स और द मीडियंस. लेकिन मैं डिटेल ट्रीटमेंट देना चाहूंगा ताकि आप थ्री पार्टिकल सिस्टम को आराम से सॉल्व करें, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा मैं बोलूंगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स मिले. फिलहाल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल. हियर आई एम हैविंग द m एंड m हियर. अब हर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढा जाए. इसकी बात करेंगे, इट्स एट द ओरिजिन, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, 0.
The point lies on the x-axis, so the coordinates are x coordinate, that is the side length, which is given as d, 0 and 0. अब यहां पे आइए बेटा, अगर हम इस मैथ की बात करेंगे, ध्यान देना बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, वो सिंपली बेटा इसका हाफ होगा. हियर दैट्स माय डियर, इट इज d अपॉन 2. और y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, वो कुछ ये डिस्टेंस होगी. दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ इट. अब इसको निकालने के दो तरीके हैं. एक तरीका है, वी आर क्वाइट हैप्पी विद द पाइथागोरस थ्योरम, दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस इज माय डियर d अपॉन 2. तो पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो. बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज्यादा जा सकता है. ये एंगल आपका 60 है. अगर d को रिजोल्व किया जाए तो ये आएगा d cos 60. So if this is the x coordinate, so I'll write down the x coordinate, even if वो मैंने directly निकाला as d upon 2, but still I want to make it clear. It is d cosine of 60 degree. Cos 60 is sine 30, that is 1 upon 2. So you will end with the d upon 2, जो मैंने directly बोला. और अगर y, अगर इस वाले component की बात करेंगे, जो कि हमारा बेटा y है, so it will be d sine 60. This is d cos 60, this is d sine 60 from the basics of the resolution. Y is equal to d sine 60 degree. Sine 60 is root 3 upon 2. So it is root 3 upon 2 of d. In fact, बेटा, altitude of an equilateral triangle, वो आप directly आज के बाद याद रख सकते हैं. That is root 3 by 2 of its side length. I think the game is over. So the y coordinate is root 3 by 2 of d and the z coordinate is 0. The particle lies in the plane. ओके, मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई तूफानी बात है. इट इज नाउ जस्ट दिस सबस्टिट्यूशन प्रॉब्लम. यू विल स्टार्ट योर बिजनेस विद द एक्ससीएम. द फॉर्मूला इज m1 x1. अब यहां पे थोड़ा मैं टाइम सेव करना चाहूंगा आपका और मेरा भी. m1 x1, x1 is 0, so no need of writing that term. And m2 x2, m2, here is the mass m, x2, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो d है बेटा, प्लस m3 x3, there's the mass m, और उसका x coordinate d upon 2. So it's m into d upon 2. Every time in the denominator it is total mass. That's m plus m plus m. That's my dear. I'm happy with the 3m. We can eliminate m in both numerator and denominator. m and m will go. यहाँ पे बचेगा d plus d by 2. That is simply 3d upon 2. और यहाँ पे 3 by 1. Yeah, that is same as 1 upon 3. We can say bye bye to 3 and it is d by 2. और होना भी चाहिए. हमने अभी बोला, hey, you are having the identical particles at the corners. Center of mass lies at the geometric center. So that will definitely lie on this axis. And इस axis की बात करेंगे, कोई भी point इस axis पे लिया जाए, उसका x coordinate आपको बेटा d by 2 मिलेगा. Similarly, you can take care of the y coordinate, so on and so forth. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Next, position vector of center of mass. अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूंगा, डेफिनेटली आई विल से यू विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट और दिस टॉपिक. यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. फॉर एग्जांपल, हैव अ लुक माय डियर. अगर हम बात करेंगे हाउ टू गो फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहां पे आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलती है. या तो आपके पास तीन पार्टिकल्स दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आपने सेंटर ऑफ मास को ढूंढा, आपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढा. फॉर एग्जांपल, दे आर x, y, I will say the z. So the case number 1 for we people is, you know the coordinates of the center of mass. Now then the question is how to take care of the RCM, that's the position vector of center of mass. It's ordinary, it is fundamental. You know the coordinates of the point. वहां से वेक्टर कैसे बनाया जाए? Very simple. So if the coordinates are x, y and z, it's given by xi plus yj plus zk. This will be the position vector of the center of mass. ये आपका एक केस है. Now जो दूसरा केस है, in fact जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, what is that? Have a look. दूसरे केस में आपको, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग द पार्टिकल हियर ऑफ मास m1. इसका, दिस इज माई ओरिजिन. इसका पोजिशन वेक्टर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल 1 दैट इज मेंशन्ड और गिवन एज r1. लाइकवाइज हमारे पास यहां पे और एक पार्टिकल है,
दैट्स माय डियर m2. और अगर मैं बात करूंगा इसके पोजीशन वेक्टर की, this is the position vector number 2, and let me generalize it up to, we will say the mn, और इसका position vector जो है वो बेटा है rn. So if I want to take care of the case number 2, or I can say the possibility number 2, what is that? आपको पार्टिकल्स के masses दिए गए हैं और आपको उन पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं. Then if you want to take care of the position vector of the center of mass, how to write that? It is given by, very simple, m1, mass of the particle 1 multiplied by uska position vector, plus it is given by m2 multiplied by uska position vector, and so on to, you will go with mn rn vector divided by, as usual, the total mass of the system. So this is how we are going to take care of the position vector of the center of mass. अगर एक example लेना चाहूंगा ताकि पूरा clear हो जाए. Have a look, my dear. We are having the 10 kilogram particle with the position vector, we call this as the r1. Position vector is given as, I'll write it as, for example, it is given as 2i plus 3j. Likewise, मेरे पास और एक particle है of mass, for example, it is 20 kilogram. अगर इसके position vector की बात करेंगे, let me call that as the r2 vector. The position vector is, for example, I plus j plus I will go with the 2k. And इसी तरह I am having the one more particle of mass. Let me go with not 5, I will go with the 30 kilogram. 30 kilogram हमारे पास है. इसके position vector की बात की जाए, for example, this is my dear r3. Suppose the position vector is simply j plus 2k. अब मुझे क्या करना है? The target for we people is find the position vector of center of mass. So I will start my business like this. Have a look. I'll write it as RCM. I hope this color is visible. Let me go with the white one. RCM, position vector of center of mass. How to go for it? The result is like this. It's M1 R1 vector plus M2 R2 vector. It's a three particle system. M3 R3 vector divided by the total mass of the system, that's M1 plus M2 plus M3. अब आइए बेटा इधर. It is now just the substitution problem. RCM. Have a look. M1 हमारा 10 है. So it's given by the 10 into R1 की जगह उस R1 आपका दिया गया है 2i plus I will go with the 3j. Likewise, plus M2. M2 की बात की जाए, it is 20 kilogram. It is 20 kilogram into R2. R2 की बात की जाए, I plus j plus 2k. I plus j plus 2k. And finally, the third one, I guess that is 30 kilogram. Here is the 30. इसका position vector R3, that is j plus 2k. J plus 2k divided by the total mass. Total mass की बात की जाए, 10, 20 is 30 and 30. That's my dear, I will say the 60. आइए बेटा इधर, to make it simple for you people, we can eliminate these zeros. अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 10 को कॉमन निकाल के आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So you will end with what? 2i plus 3j. It is 2i plus 3j. यहाँ पे आइए, 2 into I, that's 2i. 2 into j, that is 2j, plus 2 into 2k, that is 4k. और यहाँ पे आपका क्या आएगा? 3 into j, that is 3j, plus 3 2 are 6 with the k, and in the denominator, you are left with the 6 here. अब यहाँ पे, to make it to simplify it further, it is 2i. Any other I we are left with? 2i, and did I rush anywhere? It is 2i plus 3j, 2 into I. It's I here. Sorry. All right. 2i plus 2i. That's 4i. J पे आइए बेटा. 3j, 2j and 3j. That's 8j. 8j. और इसी तरह अगर k की बात करेंगे बेटा, 4k plus 6k. That is 10k.
that is 10k, and in the denominator you are left with the 6. You can simplify it further. It's 4 by 6. 4 by 6 is same as 2 by 3 with the I, plus 8 by 6, it is 4 by 3 with the j, and 10 by 6, that is 5 by 3 with the k. So this is going to be the final answer. So in this pattern, आपको masses दिए जाते हैं और आपको उनको position vectors दिए जाते हैं, and you have to go for the position vector of the center of mass. All right, आगे बढ़ते हैं बेटा. Let me have a little water, please. The next question or next topic for we people is center of mass of continuous mass distribution. Have a look. This is the coordinate system for we people. We are having a body. I don't know the body is 1D or 1D or 2D or 3D. कोई body कोई random body मैंने यहाँ पे ली बेटा. Now the question is how to take care of the center of mass of this system, this continuous mass distribution or continuous mass system. तो अप्रोच क्या रहता है, एक छोटा सा एलिमेंट हम पिक करते हैं. This is a small element of mass dm. If it is 1D configuration, like you are having some thin rod, then the small element is the length element. While dealing with the 2D configurations like disk, you are having a thin disk or some sheet, it's going to be the area element, and in your 3D configuration, it's going to be the volume element. अगर हम बात करेंगे इसके coordinates की, for example, the coordinates of this small element are x, y, and z. Then, अगर आपको बेटा इस system का ढूंढना है, निकालना है center of mass, I will start my business with the xcm, x coordinate of center of mass. What's the result, my people? It is given by integral dmx divided by the total mass, which can be written as integral dm. Likewise, if you want to go for the ycm, y coordinate of center of mass, it's given by integral dm into y divided by total mass, which is expressed as integral dm. Likewise, if you want to take care of the z coordinate of the center of mass, it is given by integral dm into z divided by the total mass, that is again integral dm. तो अगर आपको कोई derivation, I don't think कोई derivation आपको पूछी जा सकती है, तब भी मैं एक example दिखाने जा रहा हूं बेटा यूनिफॉर्म रॉड का. But remember, not only for your board examination, जब भी आपको कभी भी center of mass निकालना होगा continuous mass distribution का, ये results आपके जहन में होनी चाहिए. अब इससे पहले बेटा मैं rod वाली example पे आऊं, मैं एक simple चीज आपके साथ share करना चाहूंगा. What is that? How to take care of dm, how to calculate the dm. Remember, dm, that's the mass of the small element जो आप pick करते हैं. While dealing with the rods or the wires or the cables or the threads and all that, the dm is expressed as lambda into dx, where lambda is mass per unit length and dx is the length of the small element. While dealing with the 2D configurations, the dm, the mass of the small element, is expressed as sigma into dA, where sigma is the surface mass density, which is actually mass per unit area multiplied by dA, that is the area of that small element. And while dealing with the 3D configurations, the dm is given by rho into dV, where rho is the density की जो सबसे common definition है mass per unit volume into dV, that is the volume of that small element. So this is how we take care of the dm, that's the mass of the small element. It depends on configuration कौन सी है, whether it is 1D, 2D or 3D. Now rod की बात करेंगे, sir rod कहाँ 1D होती है? There is the cross section area. I'm dealing with a thin rod, or I can say the radius or the dia is very small in comparison to the length of the rod. चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. I am telling you there are least or zero chances of this derivation. Have a look. We are having a uniform rod. हमें इसका ढूंढना है
center of mass. Now, एक बात तो clear है, everybody knows it. The mass, the rod is uniform, so we know center of mass coincides with the geometric center. आपका एक end जो है वो rod, वो origin पे, rod का जो एक end है वो बेटा origin पे है. So we know it very well. The center of mass will be at a distance of what? At a distance of L/2 from one of its ends. अब approach क्या रहेगा हमारा बेटा? मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं डायग्राम पहले से ही बना चुका हूँ. We are having a small element जिसका mass बेटा dm और जिसकी length जो है that's my dear dx. If we talk about the length of the rod that's given as the small l here, and let us suppose the total mass of the rod that's my dear, I will say the capital M. अब यहाँ पे आओ. If you deal with the xcm, अभी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं xcm. What's the formula? The formula is integral dmx divided by integral, I will say the dm. अब यहां पे आओ. dm की बात की जाए, हमने अभी बोला how to deal with the dm. The dm is lambda into dx. Lambda, the mass distribution is uniform, so the lambda can be simply written as total mass divided by the total length multiplied by the length of this element, that is here I'll say the dx. अब यहां पे आई, let us switch towards the result. xcm, x coordinate of center of mass, it's integral dm के बदले it is m divided by the length of the rod that is given as the small l multiply आपका dx है और यहां पे result में आपका x है. In the denominator integral dm is actually the total mass जो कि हमने directly यहां पे लिया है, that's my dear simply the m. Even if you can take integral dm, तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब यहां पे आओ, टाइम फॉर लिमिट्स. जब इस स्मॉल एलिमेंट की बात की जाए, क्वेश्चन ये है स्मॉल एलिमेंट को कहां पे पिक किया जाए? द आंसर इज वेरी सिंपल, रॉड पे कहीं पे भी. What can be the nearest point? Exactly the left end which coincides with the origin, and the left end simply corresponds to x is equal to 0. So the lower limit is going to be the 0. And सबसे दूर कहां पे इस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं? That's actually the right extreme. Right extreme implies x is equal to L. That's the length of the rod. So the limits will be from 0 to L. If I'm not wrong, it is no longer the question of now center of mass. It is simply the question of integration, and you can take care of it. Have a look, my people. Let me go for the analysis. M can be eliminated. यहाँ पे M constant है और L भी constant है. M by L बाहर निकालूंगा और यहाँ से M को eliminate किया जा सकता है. So in the numerator you are left with only 1 by L. और यहाँ पे what is the integration of, we will say the x. The answer is simply the x square upon 2. मैं 2 को भी बाहर निकालूंगा. You are left with the x square and the limits are from 0 to L, which implies if you want to go for xcm, it is given by 1 by 2L as such. Time for limits. x की जगह अपर लिमिट आपका L है with the square minus 0 square. बेटा L square minus 0 is L square only, so you are left with L square upon 2L. L and square can be neutralized or simplified. You will end with the answer L by 2. Aha, we know it very well. Center of mass exactly at the geometric center at a distance of L by 2 from one of its ends. No need to go for YCM and ZCM. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. So this is the end of the first part. That's your center of mass part. अब यहां पे बेटा जो मैंने हेडिंग ली है, that's kinematics of rotational motion. यहां पे आपको कोई सिंपली 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई न्यूमेरिकल यहां से पूछी जा सकती है. नंबर 1 विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस. अब यहां पे देखो बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स द न्यूमेरिकल. पॉसिबिलिटी नंबर 1, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी जाती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. The theta is given as the function of time, and the requirement for you people is angular velocity, that omega, which is simply given by d theta upon dt. So पहला result जो आप याद रखेंगे as far as the numerical part of this area is concerned, you express your angular velocity or angular speed as d theta upon dt. Plus कभी कभार यहाँ से आपको इसकी integral form भी ध्यान में होनी चाहिए. Omega will be given, theta is the requirement. Then in that case it is simply, अगर आप थोड़ा इसको घुमाएंगे, you will end with omega dt और यहाँ से आपका बेटा d theta. Take the integral on both sides, proper limits, it will be for example from t1 to t2 or यहाँ से from theta 1 to theta 2. But I will suggest, if you know this result, then it's not the big game for you people to go for this result.
Likewise, another one. और क्या possibility है? The omega will be given as a function of time. The omega will be given in terms of time. The target for you people will be alpha, the angular acceleration. Everybody knows the result. Alpha is expressed as d omega by dt. Accordingly, इसकी भी integral form आप ज़हन में रखेंगे. And finally, as far as the application of differentiation and integration or application of calculus is concerned, आपको यहाँ पे और एक case मिलेगा. What is that? The omega can be given as a function of theta, but not the big issue for you people. You express your alpha as omega into d omega upon d theta. This result is analogous to, अगर आपके ज़हन में होगा, you express your a as v into dv upon dx. ये result कई बार आपने देखा होगा in your kinematics. बिल्कुल इसी की यहाँ पे अगर आप analogy लेंगे, a की जगह अल्फा, v की जगह ओमेगा और यहाँ पे x की जगह थीटा, so result को याद रखने में आसानी होगी. So these are the three results जो आप जहन में रखेंगे when it comes the numerical based on the application of calculus in your rotational motion. Then I am having the speed equations or simply the equations of the motion. You know it very well. अगर आप क्वेश्चन में ये चीज विटनेस कर रहे हो that the alpha, the angular acceleration that is mentioned or given, what is that? Constant. तो उसके बाद बेटा you can have the relation like omega is equal to omega naught plus alpha t, which is analogous to v is equal to u plus at. मैं कोई नई चीज नहीं सुना रहा हूं बेटा. Number 2, you'll be having theta is equal to omega naught t plus 1 upon 2 alpha t square, which is analogous to s is equal to ut plus 1 upon 2 at square. And इसी तरह, if you want to go for the third equation, that is omega square minus omega naught square is equal to, I will say 2as, that's 2a for acceleration, it is alpha and theta. तो इनके basis पे बेटा there is a possibility आपको एक 2 mark का numerical पूछा जाए. चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं. Next topic for we people, that's actually moment of inertia, one of the important topic when it comes this unit or this chapter. Moment of inertia, a little idea or the brief idea of the moment of inertia. When I'm saying the moment of inertia की जब बात चलती है तो हम पहली चीज बोलते हैं it plays the role of mass in the rotational motion. क्या मतलब? आपने laws of motion में एक term सुनी है, definitely सुनी भी होगी, that's your inertia. Inertia, the property of a body to remain in its state and to show a position when you want to change its state, either from rest to motion or from motion to rest or from direction 1 to direction 2. फिर वहां पे दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, hey, how to measure the inertia, how to check बॉडी में कितना inertia present है, बॉडी का कितना inertia होगा. The answer is mass is the measure of inertia. जितना mass ज्यादा होगा उतना inertia ज्यादा होगा, जितना mass कम होगा उतना inertia कम होगा. Now back to the rotational motion. अगर आपको rotational motion में देखना है कि बॉडी की कितनी टेंडेंसी है अपोज करने की या अपने स्टेट में रहने की, या बॉडी कितनी इनर्टनेस दिखाएगी जब आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहोगे, जब आप उसको रोटेट करना चाहोगे, या ऑलरेडी रोटेशन में है उसको स्टॉप करना चाहोगे, या ऑलरेडी रोटेशन में है किसी एंगुलर स्पीड से जा रही है आप एंगुलर स्पीड को चेंज करना चाहते हो. देन द आंसर इज कितना बॉडी अपोज करेगी, कितना इनर्टनेस दिखाएगी. व्हाट यू हैव टू चेक, you have to check its moment of inertia. जितना moment of inertia ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस बॉडी को रोटेट करना, या अगर वो बॉडी ऑलरेडी रोटेशन में है उसको स्टॉप करना. सो हियर वी गो, इट प्लेज द रोल ऑफ मास इन द रोटेशनल मोशन. दैट इज इट मेजर्स हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट द बॉडी और स्टॉप द रोटेटिंग बॉडी और सिंपली एक्सेलरेट द रोटेटिंग बॉडी. फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है, व्हाट इज दैट माय डियर? दैट इज डिपेंडेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? Number 1 is simply the mass of the body, and remember the moment of inertia is directly proportional to the mass. I is the symbol for moment of inertia. एक हेवी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एक लाइटर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा व्हेन यू कंपेयर देयर masses. नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन. जब मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा इसमें आप सिंपल चीज याद रखेंगे, जितना मास नजदीक होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को,
उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जितना मास दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. सिंपल एग्जांपल, इफ आई विल स्प्रेड माय आर्म्स आर हैविंग द रीजनेबल वेट और मास. अगर मैं अपने आप को रोटेट करूंगा, दिस इज माय वन स्टेट ऑफ रोटेशन, देन इन द सेकंड केस आई विल फोल्ड माय आर्म्स. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द हाइपोथेटिकल एक्सिस अबाउट व्हिच आई एम रोटेटिंग. तो इस स्टेट में व्हेन आई एम स्प्रेडिंग माय आर्म्स मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. रीजन, मास दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड व्हेन आई एम क्लोजिंग और फोल्डिंग माय आर्म्स, मैंने मास को नजदीक लाया एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. सो आई विल बी क्वाइट हैप्पी विद, अगर मैं यहां पे एक रिलेशन लिखूंगा, I is proportional to r square, where r is the perpendicular distance from the axis of rotation. Next, axis of rotation. Yes my people, अगर आपको एक बॉडी को रोटेट करना है, when you want to rotate the body, then there are multiple options या multiple possibilities when it comes to the axis of rotation. For example, अगर मैं बात करूंगा बेटा एक रॉड की, मुझे इस रॉड को रोटेट करना है. Possibility number one, the axis of rotation exactly passing through the center of mass. Possibility number two, axis of rotation passing through one of its ends. Possibility number three, the axis of rotation at some angle with the axis of rod, or you may have some random axis and all that. What we witness, हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंट एक्सीज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेटा डिफरेंट है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्सीज ऑफ रोटेशन. एंड रिमेंबर, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा बेटा मिनिमम होता है जब एक्सीज ऑफ रोटेशन जो है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सो रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is sensitive, it depends on axis of rotation, और ये minimum होता है about an axis passing through the center of mass. So that's what I have written here. Moment of inertia is minimum, not minimum, I will say always minimum about COM axis. Now there is one more point जो in fact हम इसी में add कर सकते हैं, but to make it more simple for you people, मैंने अलग से point लिया. It depends on the orientation of the axis of rotation. What do you mean by that? Have a look. मान लीजिए ये हमारे पास बेटा कोई रिंग या डिस्क है. दिस इज द रिंग और डिस्क फॉर वी पीपल. अगर मैं बात करूंगा बेटा, दिस इज एन एक्सिस एंड दिस द वाई एक्सिस. दिस इज एन एक्सिस, हियर इज द जेड एक्सिस, जिसको मैं कुछ यूं ड्रॉ करूंगा, बट एंश्योर मैंने वर्ड यूज किया, मैंने टर्म यूज किया, इज द जेड एक्सिस. अगर हम बात करेंगे बेटा इन दो एक्सिस की सिमिलैरिटी की, both axes are passing through the center of mass, but where lies the difference? इनकी जो orientation है वो different है. The z axis is perpendicular to the plane of the disc or the plane of the ring, while as the y axis lies in the plane of the disc or the plane of the ring. And remember, iy is not equal to iz. क्या पता चला? You are having the two axes. There is a similarity, there is a common thing between the two axes. What is that? Both are passing through the center of mass, but beta इनकी जो orientation है वो different है. You may have an axis, not only this one, I am having the axis which is tangential in the plane, I am having the axis which is tangential perpendicular to the plane. तो moment of inertia इन दो axes के about जो है वो same नहीं होगा, वो different होगा. So remember, it also depends on orientation of axis of rotation. Okay. Moment of inertia of discrete mass system, and I'll be having the single particle or the point mass. ये हमारे पास बेटा एक point mass है which is rotating about this axis such that the perpendicular distance from the axis of rotation is r. The perpendicular distance from the axis of rotation is, my dear, r. Then remember, while dealing with the moment of inertia, of the single particle, very simple, it is every time expressed as mr square. I is equal to moment of inertia of the single particle or the point mass of mass m at a distance r, perpendicular distance from the axis of rotation, that is given by mr square. अगर यहाँ से units की बात करेंगे बेटा, we express the mass in the kilograms, we express the distance in the meters with the square. So kilogram meter square is the unit. और अगर बात करेंगे बेटा dimensional formula की, dimensional formula moment of inertia, it's going to be m and simply L2.
Let's extend it up to the n particle system. We are having a situation, particle m1 at a distance of r1 from the axis of rotation, likewise m2 at a distance of r2 and m3 at a distance of r3, and it is given as the m4. Let me modify it a little. For example, it is rn and this particle is having the mass of mn. Ab question hai, how to deal with the moment of inertia of this system? Very simple. Moment of inertia will be simply given by summation of mi ri square, where I varies from 1 to n. Sir, score simple बनाए. Yes, no problem at all. Simply, moment of inertia, when you are having the more than one particle, you are having the multiple particles, take the sum of what? mr squares. You start with the particle 1, so इसके लिए लिखा जाएगा m1 r1 square. You start with the particle 2, इसके लिए लिखा जाएगा m2 r2 square, plus likewise I can go up to the mn, it is mn rn square. This is how you take care of the moment of inertia of n particle system. Next please. Moment of inertia of the continuous mass distribution. हम moment of inertia कैसे निकालेंगे? When it comes the continuous mass distribution. ये हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है बेटा, which is rotating about this axis, Have a look. तो ये जो element यहाँ पे हमने पिक किया है, this is the element. इसका mass मैं मानूंगा बेटा dm. इसका mass जो है वो हम मानेंगे बेटा dm. Now recall the basics of the rotational motion. जब एक बॉडी की रोटेशनल मोशन होती है, उसकी जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, उनका पाथ कैसा होता है? द आंसर इज सिंपली माय डियर, उनका पाथ होता है सर्क्यूलर. सपोज बेटा इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, मैं मानूंगा इसकी डिस्टेंस, मैंने डायग्राम में आर दिया गया है बट नो प्रॉब्लम, मैं मानूंगा इसकी डिस्टेंस जो है दैट्स माय डियर, आई विल से द एक्स. अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट को ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक ए सिंगल पार्टिकल, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैं मानूंगा बेटा, आई विल से द डी आई. इट इज जस्ट लाइक ए सिंगल पार्टिकल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो इसका मास जो है वो dm है, और इसकी जो दूरी है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज गिवन बाय द एक्स स्क्वायर. बट द टारगेट इज नॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. We have to go for the moment of inertia of the complete body. For that, we'll take the integral. It is integral di. It is integral. I will go with the dm into x square. Integral di is I. Integral dm x square. My dear, ये रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा. Not I will say कि डेरिवेशन तो आपको कोई नहीं पूछी जाएगी बेटा बोर्ड एग्जाम में. आपको किसी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है. बट माय डियर, इन द अपकमिंग टॉपिक्स लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या कुछ और जगह पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर, और जो ही हम देखेंगे इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर, वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट, वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट I for that, where I is the moment of inertia. So remember, moment of inertia of the continuous mass distribution is given by integral dm x square. चलिए बेटा, moment of inertia of some important bodies about center of mass axis हम लेंगे. फिर मैं ये भी सिखाऊंगा how to go for the moment of inertia about some other axes apart from center of mass axis. I will start with the ring or hollow cylinder. Ring और hollow cylinder का जो moment of inertia है वो same होता है. All right, this is the ring and the hollow cylinder for V people. This is the axis of rotation. मैं इसको dotted बनाऊंगा. If the ring lies in the xy plane, then this is the z axis. And इसी तरह अगर मैं सिलेंडर के लिए एक्सिस बनाऊंगा बेटा, रिमेंबर फॉर द रिंग एंड द हॉलो सिलेंडर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय एम आर स्क्वायर, वेयर m is the mass and r is the radius. या रिंग का और एक व्यू मैं बनाना चाहूंगा बेटा. If this is the ring for V people and the ring is in the xz plane, then the moment of inertia about the y axis that is given by mr square. Result सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको. Next is
डिस्क और सॉलिड सिलेंडर? ये बेटा अपने पास एक डिस्क और सॉलिड सिलेंडर लेना चाहूंगा. When you talk about the disk, the mass is present throughout. In case of ring, the mass is only present at the periphery, at the circumference, at the boundary. Disk में mass आपका throughout है. And again, I would like to go for the moment of inertia about the z-axis passing through the center of mass. And इसी तरह cylinder की बात करेंगे, this is the axis of rotation. So remember, moment of inertia of the disk or the solid cylinder, it is given by mr square upon 2. या डिस्क के लिए और एक वे भी आप देख सकते हैं बेटा. This is the disk for we people and this is the axis of rotation about which the disk is rotating, that the moment of inertia is what? mr square upon 2. Next, uniform rod. Uniform rod की अगर हम बात करेंगे, here we go with the uniform rod of mass m, of length my people I will say the L. तो इसका moment of inertia about an axis passing through the center. Here we go. ये बेटा आपके पास passing through the center of mass. तो वो moment of inertia आपका होता है ml square upon 12. एंड इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कभी कभार यूज होता है, moment of inertia about an axis passing through one of its ends, it is given by ml square upon 3. एंड आप यहां से भी देख सकते हो, हमने एक बात आपके साथ शेयर की कि moment of inertia is minimum about an axis passing through the center of mass. आप देख सकते हैं ml square by 12 which is less than the ml square upon 3. नेक्स्ट वन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, spherical configurations, hollow sphere. We are having a hollow sphere. We are having a solid sphere. अगर हम बात करेंगे hollow sphere की, moment of inertia, चाहे आप ऐसे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यू एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक ही बात है. ऑल और डायमेट्रिक एक्सिस, ऑल और द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसमें कुछ नहीं देखना है, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन. इट्स अ 3D कॉन्फ़िगरेशन. होलो स्फीयर की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय 2mr स्क्वायर अपॉन 3 या 2/3 mr स्क्वायर. एंड यहां पे अगर आपसे पूछना चाहूंगा, कैन यू प्लीज गेस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर के कंपैरिजन में कम होगा ज्यादा? I will take the equal mass, I will take the equal radii. Identical masses, identical radii. Very simple. यहाँ पे जो है moment of inertia कम होगा because you will get some mass close to the axis of rotation. In case of hollow sphere, the mass is only present on the surface, present on the periphery, but here mass is present throughout. So you will be having some mass close to the axis of rotation, and moment of inertia is 2mr square divided by 5. Let's continue with the remaining part. It is parallel axis theorem. जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, हमने बेटा डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखा, और वी कैन से द फैक्टर्स ऑन विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स. उनमें एक फैक्टर आपको मिला बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और जब आप किसी भी बॉडी को लेते हो, you are having the multiple options, you are having the multiple possibilities as far as the axis of rotation is concerned. जब axis of rotation की possibilities ज़्यादा है, तो accordingly हर axis के लिए अपना formula होगा when it comes the moment of inertia. So it won't be easy for a student, even for a teacher, to remember all those formulas. तो उस चीज को आसान बनाने के लिए we are having the tools, we are having the weapons in the form of two theorems, and one of the theorem is my people parallel axis theorem. अब यहां पे आइए बेटा, when we talk about parallel axis theorem, पहली बात स्टेटमेंट में आने से पहले मैं कुछ चीजें यहां पे पहले हाईलाइट करूंगा. It involves two axes, and उन दो axes की जब बात की जाएगी बेटा, they will be parallel to each other, and there is an essential condition. One of them must pass through the center of mass. One of them must be the centroidal, that is actually the axis passing through the center of mass. Once आपको ये conditions fit हो गई, then we are ready for the statement. अगर आप यहाँ पे इस body को देखेंगे, कोई random body हमने ली है, और ये बेटा इस body का है, मैं मानूंगा इसका center of mass. So this is an axis passing through the center of mass, और इसके about moment of inertia उसको हमने IC से represent किया या ICM से represent किया. Then we wish to define or calculate
The moment of inertia about this axis, इस axis की अगर हम बात करेंगे, it is parallel to the axis which is passing through the center of mass. Then as per parallel axis theorem, जब हम statement की बात करेंगे, moment of inertia about an axis which is parallel to the center of mass axis, let me call this as I parallel. Moment of inertia about an axis parallel to the center of mass axis किसके बराबर होता है? IC. When I am saying the IC, it's the moment of inertia about an axis passing through the center of mass plus mass of the body. फिर आप देखेंगे उन दो axes के बीच का जो perpendicular distance है, that is d in the given situation, उसका आप लेंगे square. So this is actually the statement of the parallel axis theorem. एक बार फिर have a look my people. In some situation you are having some body, ये कोई body आपके पास है, then my people ये इस body का है center of mass. We will be having an axis passing through the center of mass. और इसके about जो moment of inertia है वो हम बेटा मानेंगे IC. Mass of the body will be taking, that's my dear capital M. Then we wish to calculate, we wish to define the moment of inertia about this axis which is parallel to the center of mass axis, और इनके बीच का जो perpendicular distance है वो हम d मानेंगे. मान लीजिए इस axis के about जो moment of inertia है हम उसको बोलेंगे I parallel. I parallel as per parallel axis theorem. पहली चीज, it involves two axes. Yes, one of them, yeah, they should be parallel. बिल्कुल सही है. And one of them must pass through the center of mass. Once आपको ये conditions fulfill हो गई, we are quite happy and comfortable with the statement of the parallel axis theorem. What is the statement? Moment of inertia about an axis which is parallel to the center of mass axis is given by IC. IC is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass plus mass of the body multiplied by the square of the distance between the two axes. That's it, my people, when it comes to the statement. अगर आप statement अपनी जगह note भी करना चाहेंगे, आप लिख सकते हैं moment of inertia about an axis parallel to the center of mass axis is equal to moment of inertia, yeah, is equal to sum of moment of inertia about center of mass axis and mass times the square of the distance between the two axes. This is your statement. एक example लेना चाहूंगा जिससे बेटा clear हो जाएगा. For example, my dear, let me take an example of ring. ये बेटा अपने पास एक ring है. This is the ring. This is the axis passing through the center of mass. और इसके about moment of inertia IC. Ensure the ring is in the xz plane and your y axis is the axis about which we want, about which जो हमने ली है, the axis passing through the center of mass. Now we wish to define or calculate the moment of inertia which is tangential. Now we are quite happy and comfortable with कि इन दो axes के बीच का जो perpendicular distance है, that's my dear r. Then इसके about अगर मैं moment of inertia मानूंगा बेटा IT. Let's first check. Can we go for parallel axis theorem? The answer is big yes. यहां पे आओ. It involves two axes. बिल्कुल सही है. Are they parallel? Yes, they are. One of them must pass through the center of mass. बिल्कुल हो रहा है. Now, moment of inertia about this axis IT will be equal to IC plus md square. मैंने कोई नई चीज यहां पे नहीं ली. Just the statement, the result from the parallel axis theorem. Then IT can be written as IC. जब ring की बात चलती है, moment of inertia for the ring about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the ring, everybody is comfortable and happy with the mr square plus m. You talk about distance between the two axes, वो आपका r है, that's my people r square. If you want to simplify it further, very easy, very fundamental, it is 2 times mr square. One more example I want to take care of. You're hanging a rod. You have to go for the moment of inertia of the rod about an axis passing through one of its ends. This is the requirement. Even if हमें result का पता है ml square by 3 जो हमने enlist किया है, but let's try to calculate the moment of inertia about an axis passing through one of its ends. E for end. हम use करेंगे parallel axis theorem. Rod uniform, center of mass coincides with the geometric center. I will draw the one more axis passing through the center of mass. ये बेटा आपके पास और एक axis है. If you talk about the distance between the two axes, that is nothing but the L upon 2. Very simple.
अब आइए बेटा यहां पे चेक, कैन वी गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? दो एक्सिस इन्वॉल्व है, पैरेलल है, वन ऑफ देम इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो IC है. यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. Moment of inertia about an axis which is parallel to the center of mass axis is equal to IC plus mg square. mg square. अब यहां पे आओ, IE will be equal to IC की बात करें for the rod, it is given by ml square upon 12 plus m, the distance between the two axes is L upon 2, और L by 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे that will be the L square by 4. जरा यहां पे आइए बेटा, IE is equal to यहां पे 4 ml square 12 ml square, that's given by 16 ml square divided by 12 4. I will write it as the 12 into 4 even if that's 48. अब यहां पे आओ, let's finish it, let's say bye bye to it. 4 are 4 will go, 4 1 are, 4 3 are. So you will end with the result which you know very well. What is it? ml square upon 3. चलिए बेटा, this was your parallel axis theorem. Next is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis की theorem की जब हम बात करते हैं बेटा, it is also called as theorem of sheets or laminar theorem. Theorem of sheets or laminar theorem. अब बेटा यहां पे देख सकते हैं that term itself reflects that कि कुछ ना कुछ sheets के related है. Yes my people, while dealing with this theorem you can only use it for the 2D bodies or 2D objects. In fact this is one of the restriction, even we can say the limitation of the perpendicular axis theorem. What is it? We can only use it for the 2D bodies, or I can say the sheets or the laminas, so on and so forth. अब यहां पे आओ बेटा, let's go for the statement. यहां पे हमारे पास एक 2D body है. If I'm not wrong, the body lies in the xy plane. There is nothing wrong. Normally आपको यहां पे x मिलता है, यहां पे y मिलता है, यहां पे z मिलता है. There is nothing wrong with that. We can interchange the axes. The only important thing is that the system is orthogonal. All the three axes are mutually perpendicular. अब यहां पे आओ, this is the y axis और इसके about moment of inertia मैं मानूंगा बेटा IY. This is the x axis, इसके about moment of inertia मैं मानूंगा IX. And this is the z axis, इसके about moment of inertia वो हम मानेंगे बेटा, we will say the IZ. अब यहां पे आओ, what is the statement? पहले आप डिसाइड करो बॉडी आपको किस प्लेन में है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द बॉडी लाइज इन द XY प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू दीस टू एक्सिस. माय डियर, ये आपकी है y एक्सिस, तो ये आपकी x एक्सिस है. सो दिस प्लेन विल बी द XY प्लेन. द बॉडी लाइज इन द XY प्लेन. टेक द सम ऑफ दीस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज दैट? IX plus IY, and check the axis which is perpendicular to the plane or which is perpendicular to these two axes. What is that? Z. So sum of the two will give you the IZ. This is simply the statement of the perpendicular axis theorem. अगर मैं थोड़ा इसको और डिटेल में लेना चाहूंगा बेटा, यहां पे have a look. I will say पहली चीज, it involves three axes and what is it? They are mutually perpendicular. In case of parallel axis theorem, एक restriction थी, एक essential condition थी. What was that? One of them must pass through the center of mass. But my people, यहाँ पे they may or may not. They may or may not pass through the COM, center of mass. चलिए, I think I want to avoid this chaos a little bit, क्योंकि normally बच्चों में एक image बन चुकी होती है. This is the x-axis, this is the y, and the perpendicular one is the z. अब यहाँ पे आओ, I want to go for the statement. Have a look. ध्यान देना बेटा. For example, this is some body for we people, but ensure it is a 2D body. ये आपकी है x-axis, इसके about moment of inertia, that's IX. This is one more axis, इसके about moment of inertia IY, and here we go with the z axis, जिसको हम कुछ यूं ड्रॉ करेंगे. इसके about moment of inertia जो है, that's my people, I will say the IZ. अब पहले यहां पे आइए बेटा, can we go for perpendicular axis theorem? Check the condition. It involves three axes. बिल्कुल सही. They should be mutually perpendicular. बिल्कुल सही. Now we are ready for the statement. तो क्या करेंगे आप देखेंगे बॉडी किस प्लेन में लाई कर रही है.
Suppose if the body lies in the xy plane, then you will be taking the moment of inertia about x and y axis. बिल्कुल यहाँ पे बेटा जो हमारी body है, it lies in the xy plane. तो मैं sum लूँगा moment of inertia about the x axis and moment of inertia about the y axis. Then you are left with the third axis, which is perpendicular to the plane of the body, या perpendicular to both axes. But इनका sum हमें देगा moment of inertia about that perpendicular axis. So simply आप while using the perpendicular axis theorem decide, check body किस plane में lie कर रही है, then you are left with the axis जो इस plane को perpendicular होगी और उसी के about आपको moment of inertia मिलेगा. To make it more simple, suppose if the body lies in the, let me say, YZ plane, अगर body जो है YZ plane में lie कर रही है, then you are left with one axis which is perpendicular to y and z, that is nothing but the x. तो ix को define किया जाएगा, and as per perpendicular axis theorem, it will be iy plus I will say the iz. Likewise, if the body lies in the xz plane, अगर body xz plane में lie कर रही है, then the axis which you are left with perpendicular to x and z, वो आपकी y axis है. So you will go with iy as ix plus iz. I hope it is clear to you people. I'll be having an example to make it more clear. Have a look. For example, this is a square plate for we people. ये अपने पास एक square plate है. One of the axes I will take this. This is the I1, the moment of inertia about this axis. I'll be taking the one more axis in this way, जिसके about moment of inertia I2, and I'll be taking one more axis in this way, जिसके about moment of inertia I3, and I'll be taking one more, जिसके about moment of inertia I4. What's the requirement? Moment of inertia about an axis passing through the point O, and that is z axis perpendicular to, we will say, perpendicular to the plane of the body, and in fact perpendicular to all these axes. अब यहाँ पे देखो, can we go for perpendicular axis theorem? जरा यहाँ पे आओ. The target for we people is moment of inertia about an axis which is passing through the point O, and if I'm not wrong, that axis is our z axis. अब यहाँ पे आओ. If you take 1 and 2, they are perpendicular to each other, and also z-axis is perpendicular to the both. So if I'm not wrong, it will be given by I1 plus we will say the I2. इसमें कोई लड़ाई नहीं है. You can have a check. आपकी ये वाली axis, I would like to highlight the two. ये वाली axis और ये वाली axis, they are perpendicular to each other. And also, the axis about which you have to calculate the moment of inertia, that's perpendicular to both. So we are quite happy with I1 plus I2. But it's a square plate. From the basics of the geometry, you must know square में diagonals bisect होते हैं at right angles. So I3, yeah, this axis and this axis, they are also, my people, perpendicular. So it can be also written as I3 plus I4. That's it, my dear. Next example I want to take care of. For example, we are having the ring or disc. एक configuration हम लेंगे. For example, I will take the ring. And what is the requirement? The requirement is find the moment of inertia about the diametric axis. That is in fact an axis passing through the center of mass, but in the plane of the ring. Have a look. ये एक axis अपने पास. इसके about moment of inertia Ix. This is one of the axes. इसके about moment of inertia I will say the Iy. दोनों के about moment of inertia same. Simply both are the diametric axes and they lie in the plane. Ix is equal to Iy. Let us suppose both are equal to I, and by the way, that's our requirement. अब यहाँ पे आओ. We know ring की जब बात होती है, moment of inertia about this axis for ring, everybody knows it. What is it? mr square, and that's the z axis. आप देख सकते हैं, I will take this axis, then we are having the combination of the three axes which are mutually perpendicular. So we are quite happy with the
perpendicular axis theorem. I'll write down the Iz is equal to Ix plus I will say the Iy. अब Iz की बात करेंगे, रिंग की बात चल रही है, it is simply the mr square is equal to, बेटा Ix और Iy बराबर है, दोनों I के बराबर, so it is I plus I. If I'm not wrong, that's 2 times I. The game is over. I will be equal to mr square upon 2. That is your answer. चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं. Last part from this moment of inertia part, and if I'm not wrong, this is going to be very important. क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में भी. नीट पे अगर आपकी नजर है तो 3 बार क्वेश्चन आया है पिछले 4 सालों में. रेडियस ऑफ गायरेशन represented by the symbol K. आइए बेटा इधर, have a look my people. Okay, I hope this color will be visible. Have a look. ये बेटा अपने पास कोई बॉडी है, ये अपने पास कोई बॉडी जिसका मास जो है, दैट्स माय डियर, आई विल से द कैपिटल M. हैव अ लुक. अगर हम बेटा इस बॉडी को रिप्लेस करेंगे बाय अ पॉइंट मास, इफ यू रिप्लेस द बॉडी बाय अ पॉइंट मास और द सिंगल पार्टिकल सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी is equal to the moment of inertia of this point mass. फिर इस point mass की जो दूरी होगी, perpendicular distance होगी from the axis of rotation, but that distance is what we call as radius of gyration. I'm repeating. You're having a body of mass M. Let's replace the body by a point mass such that, now this is the condition, such that moment of inertia of the body, I will write it here, moment of inertia of the body is equal to the moment of inertia of that point mass. फिर बेटा उस point mass की क्या दूरी होगी from the axis of rotation, that distance is what we call as radius of gyration. If I'm not wrong, बिल्कुल मैंने यही यहाँ पे लिखा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. If we replace the given body by a point mass such that moment of inertia of that point mass, here we go, is equal to the moment of inertia of that body, then the perpendicular distance of point mass from the axis of rotation is called the radius of gyration. Or I can say, if we represent the moment of inertia of the body by the symbol I is equal to moment of inertia of the point mass. We know it very well, that is given by mr square. It is m, or distance is bar जो है, that's my dear K with the square. So in fact my people, किसी भी body का given axis के about moment of inertia लिखा जा सकता है as mk square, where m is the mass of the body and k is what? Radius of gyration. और यहां से अगर आप k को निकालना चाहोगे, the k square will be equal to m को नीचे ले जाओ, it will be the I divided by the m, और finally बेटा आपका क्या आएगा, root of I by m. The k will be equal to root of I by m. एक दो एग्जाम्पल्स लूंगा ताकि क्लियर हो जाए. या तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी, या बेटा इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल, कोई एग्जाम्पल. हैव अ लुक. If we talk about, let me go for the disk. Disk का radius हम gyration निकालेंगे about its center of mass axis. I will express the moment of inertia as, what is it? mk square. अब disk की बात करेंगे, इसका moment of inertia about its center of mass axis, that is given by the mr square by 2. It is equal to mk square. We can say bye bye to m and m. You will end with k is equal to square को यहाँ पे लाओ, वो आएगा root of r square by 2, which is actually the r upon root 2. So this is your radius of gyration for the disk about the center of mass axis. और यहाँ पे देखा जाए, when you talk about the expression for k is equal to root of I by m, you can see the k depends on I, और अगर I की बात करेंगे, I depends on the axis of rotation. Therefore जब k की बात करेंगे, k is also dependent on axis of rotation. या यहाँ से ही आप देख सकते हैं, if the moment, if you change the axis of rotation, I change होगा. अगर I different है तो k भी आपका different होगा. One more example I want to take care of. Wait on. Let me go with solid sphere. Last year या last but 1 year या तो सॉलिड स्फीयर या तो होलो स्फीयर का पूछा गया है. वी आर हैविंग ए सॉलिड स्फीयर. इसका हम निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस. सो आई विल एक्सप्रेस एज I is equal to mk square.
सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय 2mr स्क्वायर अपॉन 5. इट इज गिवन बाय द mk स्क्वायर. आई कैन न्यूट्रलाइज m on the both sides. Here we go. या k आएगा बराबर स्क्वायर को यहां पे लाओ. It will be root of 2 upon 5 and r यहां पे appear होगा. This will be the radius of gyration. यहां पे एक हेल्प करना चाहूंगा आपकी. How to calculate the radius of gyration directly from the formula of moment of inertia. Have a look. If you express the moment of inertia of the body as alpha times mr square, अगर आप एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेस करते हो, लिखते हो एज अल्फा टाइम्स mr स्क्वायर. एग्जांपल, यू टॉक अबाउट होलो स्फीयर. अगर बात करेंगे होलो स्फीयर की, एवरीबडी इज फैमिलियर अबाउट होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर. सो इफ यू मेक द कंपैरिजन, अल्फा की जगह यहां पे 2/3. Once you know the alpha, then remember alpha is actually, my people, k square by r square. That's it. अल्फा आपका होता है एक्चुअली बेटा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. अब यहां पे आओ, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन. एक्चुअली इस रिजल्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी इन द रोलिंग व्हेन यू गो फॉर द काइनेटिक एनर्जी, द एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट. बट स्टिल आप इसको ध्यान में रखेंगे, रोलिंग आपका डिलीट हो चुका है. दिस वाज वेरी मच फ्रूटफुल व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ रोलिंग एंड ऑल दैट. अब यहां पे देखो बेटा, you can directly write now the k square is equal to alpha r square. The game is over. अगर इसी hollow sphere की बात करना चाहूंगा, you will write down the k square as alpha. Alpha is 2/3 with the r square. या k will be equal to root of 2/3 multiplied by r. So this is all about from the radius of gyration. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Show that torque is expressed as tau is equal to r cross f. आइए बेटा इधर. This is also among the important questions for your board examination. All right. चलिए बेटा इस एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश करेंगे and it is based on simply the definition of the torque. Have a look. मान लीजिए बेटा I am having a wooden plank here. एक wooden plank मैंने लिया hinged at point O. Now what I'm going to do, मैं यहां पे एक फोर्स लगाऊंगा. This is the force F जो मैं लगा रहा हूं. This is the point of application of force. The point जहां पे force आप लगा रहे हो. And I'll draw the vector, the r vector here, like this. अगर मैं r को शिफ्ट करूंगा या मैं एंगल देखना चाहूंगा, द एंगल में बिटवीन द f वेक्टर एंड द r वेक्टर, सो दैट विल बी हियर. आई विल से द थीटा. अब आओ इधर, f को रिजोल्व किया जाए. f यहां से थीटा बना रहा है तो f का कंपोनेंट यहां से, वी कॉल दिस एज द f cos थीटा, or I can say the f parallel. When I'm saying the f parallel, it's a component of the force parallel to the r vector. और दूसरा कंपोनेंट आपको यहां से मिलेगा बेटा, that's my people f perpendicular. The component of the force vector perpendicular to r vector, and based on the resolution, it is nothing but f sin theta. अब यहां पे आप देख सकते हैं, if you talk about the torque due to f cos theta, the answer is 0 simply, and you can check it just like कि अगर हम बात करेंगे f cos theta की वजह से क्या इस वुडन प्लैंक में कोई रोटेशनल इफेक्ट होगा? द आंसर इज बिग नो. इमेजिन यू आर हैविंग अ वुडन प्लैंक व्हिच इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट और आप इसको यहां से खींच रहे हैं तो इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी द रोटेशनल इफेक्ट और टॉर्क ड्यू टू f sin theta. सो आई विल से द टॉर्क ड्यू टू f sin theta. तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क में अगर आपको याद होगा, how to define the torque? There are two ways. One of the ways you will keep the r as such. ये आप लेंगे बेटा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, that's r simply. और आप लेंगे फोर्स का वो कंपोनेंट जो r को परपेंडिकुलर है. What is that? That is f sin theta. I will write it as f perpendicular. Yeah, further it can be written as r. Your f perpendicular is simply, I will say, the f sin theta. I am repeating your definition of the torque. What is it? It is given by the product of, number one, you take the magnitude of the r vector. What is r vector? We wish to define the torque about point O.
उसी O से आप बेटा एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, कहां तक, जहां पे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. सो इट इज R, एंड फोर्स का वो कंपोनेंट जो R वेक्टर को परपेंडिकुलर है, दैट इज F sin theta. द गेम इज ओवर. Tau, but RF sin theta is typically of the form AB sin theta, which is A cross B. So the tau is given by R cross F. This is one of the way of looking into this expression. Tau, yeah, one of the way of deriving this expression, that is tau is equal to R cross F. But there is one more. Have a look, my people. What I'm going to do in the next case. ये अपना force है. This is a force, my dear. We can go for the backward shift. या ये इसी force की line of action है. What I'm going to do, इस बार मैं force को ऐसे ही रखूंगा, but R का मैं देखूंगा component perpendicular to the force. I'll draw the perpendicular like this. Have a look. देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा. If this is theta, this is also theta. Very simple. Vertically opposed angles. ये आपका 90 है. अगर ये theta है तो ये 90 minus theta है. इसमें भी कोई लड़ाई नहीं. अब रिजोल्व करो बेटा, ये आपका R है, यहां से एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो कॉस कंपोनेंट आएगा. तो R का कंपोनेंट यहां से, पहली बात, दैट विल बी द R परपेंडिकुलर. दैट इज द perpendicular component of R. Perpendicular to what? Perpendicular to force vector. R perpendicular, and it will be given by R cosine of 90 minus theta, if I'm not wrong. क्योंकि R vector यहां से theta नहीं बना रहा है, 90 minus theta बना रहा है. और further it can be written as R cos of 90 minus theta, fundamental from your trigonometry. That is simply, my dear, sin theta. So what I'm going to do, torque को और एक तरीका कैलकुलेट करने का, टाउ इज गिवन बाय, कीप द फोर्स एज सच, और आर का कौन सा कंपोनेंट लिया जाए जो एफ को परपेंडिकुलर है. सो आई विल से द आर परपेंडिकुलर, और आई कैन पुट इट एज एफ, और आपका जो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर इज, माय पीपल, आर साइन ऑफ थीटा, या टाउ कैन बी रिटन एज, थोड़ा इसको रीअरेंज करो, इट इज आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, टिपिकली ऑफ द फॉर्म ए बी साइन थीटा, विच इज एक्चुअली ए क्रॉस बी. सो टाउ इज गिवन बाय R cross F. This is your derivation of the result. The tau is given by the R cross F. So there are two ways of defining the torque. Number one, R into F perpendicular, and number two, F into R perpendicular. अगर थोड़ा special cases की बात की जाए बेटा, your tau in magnitude is given by RF sine of theta. I'll write down, for theta is equal to 0 degree, and for theta is equal to 180 degree. Sine 0 is 0, sine 180 is 0. You'll end with the torque is equal to 0. और इसी तरह अगर बात करेंगे for theta is equal to 90 degree, your sine 90 is 1, in fact the maximum value. So tau will be given by R into F in this case, which corresponds to the maximum value. Likewise, अगर यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट्स की, वेरी सिंपल, R, that's your meter, force, that's your Newton, मीटर न्यूटन, या ज्यादा फेमस है न्यूटन मीटर, साइन थीटा इज जस्ट ए नंबर. इसको जूल भी बोलते हैं, बट नॉर्मली जूल हम यूज करते हैं when we deal with the work or energy. So the unit as far as the torque is concerned, it is Newton meter. And how can we skip the dimensional formula? अगर आप previous year papers check करेंगे, I'm not talking about the NEET or JEE, बोर्ड एग्जाम में देखिएगा आपको टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, या तो लास्ट ईयर या लास्ट बट 1 ईयर. तो यहां से देखा जाए, it is given by F into R, which is in fact same as that of the work. Yes, dimensionally work, energy and torque, they are same. So I'm quite happy with M1 L2 T minus 2. ये आपका dimensional formula बेटा torque का. And as far as the nature of quantity is concerned, it is typically a vector quantity. और अगर आपको direction को hit करना है, you express the torque as R cross F, जिससे ये पता चलता है torque, the direction of the torque is given by the direction of R cross F, and from the property of, we will say, the cross product, tau vector will be perpendicular to R vector, and it will be also perpendicular to the force vector. In fact, it will be the perpendicular to the plane containing R vector and F vector. So this was from this question. चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं. Angular momentum, next one. अगर हम angular momentum की बात करेंगे, have a look. Suppose this is the particle for V people, which is moving in this way. The mass of the particle is m, we are happy with that. The linear momentum of the particle, that's my dear p. और ये है बेटा particle की line of motion, the line along which the particle is moving. This is the line of motion.
Suppose we wish to define or calculate the angular momentum about this point. I call this as the point O. हम बेटा angular momentum को define या calculate करना चाहते हैं about the point O. I will draw the vector in this way. This is the R vector. And for example, this angle is, my dear, what? Theta. ये particle की line of motion. तो हम क्या करेंगे, हम इस line of motion की देखेंगे perpendicular distance क्या है, कहां से, from the point, या maybe from the axis. It is not necessary the particle is always moving along the straight line. We will check the perpendicular distance of the point, of the line of motion of the particle from the point about which we want to calculate or define the angular momentum. For example, beta, वो perpendicular distance जो है वो d है. My dear, angular momentum about the point O, let's represent that by the symbol L, is given by beta product of two quantities. Number one, the product of the linear momentum, और जो particle की line of motion है उसकी perpendicular distance क्या है from the point about which we want to calculate or define the angular momentum. और वो आप देख सकते हैं diagram में. That's my people, I will say the D. थोड़ा इसको और घुमाना चाहूंगा बेटा. If I will use the basic trigonometry, I am quite happy with the sine theta. Sine theta is expressed as perpendicular upon base, that is d divided by the r, or the d can be expressed as r into sine of theta. अब यहाँ पे आओ, angular momentum L is given by P, d के बदले it is given by r sine of theta, or we can put it as it is same as L is equal to r into P into sine of theta. या vectorially you will express the angular momentum L as rp sine theta, typically of the form ab sine theta. तो क्या आएगा बेटा, it is given by the r cross p. ये भी आप संभाल के रखेंगे, काम आएगा बेटा. It is given by the r cross p. मैं इसको थोड़ा और घुमाना चाहूंगा based on this expression. Have a look. L is equal to P R sine of theta. Linear momentum itself, what is it? Mass times velocity. So L can be written as P की जगह बेटा mvr sine of theta. या थोड़ा इसको और rearrange करना चाहूंगा. I will write it as, there is no problem at all, m into r into v into sine of theta. Yeah, L can be written as m beta rv sine theta, which can be written as r cross v. So you can check, my people, whether you want to go for the direction of L vector based on r cross v, or you can take care of it based on r cross p. So this is the brief or the basic idea of angular momentum or definition of the angular momentum. अब यहाँ पे एक केस लेना चाहूंगा. If the particle is moving, ध्यान देना जिगर, along the circular path. If the particle is moving along the circular path, I think हर एक के ज़हन में होगा, Bohr's model में भी पढ़ा होगा, an electron moving in the circular path, उसका angular momentum that is given by mvr is equal to nh by 2 pi. That's your business. But when the particle is moving in the circular path, what is the angular momentum? That is simply mvr. Let us check that, my dear. For example, we are having a particle moving along the circular path. Have a look. This is the velocity vector, which is purely perfectly tangential. And this will be the r vector. Now please don't say that this angle is acute, even if it looks like an acute, but I am sorry, the velocity is tangential and this is the radial. Angle has to be 90 degrees. So I will go with this one. L is equal to mvr sine of theta. What's the angle? R and V are perpendicular, so theta is 90. You will end with, my people, L is equal to mvr. So remember, angular momentum of a particle in circular motion is expressed as what? mvr. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Now we are having a result that is truly important. ये बहुत ज़्यादा important है आपके लिए. Angular momentum of a rigid body in rotation. और आपसे question U पूछा जा सकता है. Show that angular momentum of a rigid body is expressed as L is equal to I omega. I can write the result for you people. L is equal to I omega, which is analogous to L. P for what? Linear momentum.
Moment of inertia, it plays a role of what? Mass. And omega की जगह v. Aha, you know the linear momentum as mass times velocity and angular momentum as I times omega. चलिए इस रिजल्ट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, या मैं ये बोलना चाहूंगा, let's try to find the angular momentum of a rigid body in rotation. Have a look. For example, ये बेटा अपने पास एक रिजिड बॉडी है, ध्यान देना. Suppose the body is rotating about this axis with the angular speed of omega. ध्यान देना बेटा. I will pick the small element here. Everybody knows when the body is in rotation, the path followed by its parts or components is simply circular. So अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका पाथ जो है वो सर्कुलर है. और अगर इस सर्कल के रेडियस की हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वो रेडियस जो है वो x है, और बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं मानूंगा, आई विल से द v. अब आइए इधर, फर्स्ट लेट्स गो फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. लेट अस सपोज दैट एंगुलर मोमेंटम इज dl. अभी हमने देखा पार्टिकल फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ, उसका एंगुलर मोमेंटम mvr. फॉर एग्जांपल द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, दैट्स माय डियर, I will say the dm. तो इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा dm, which is actually मास के बदले जो इसका है, इनटू इसकी वेलोसिटी, दैट्स v, और इसके रेडियस की बात करेंगे, दैट्स माय डियर, I will say the x. Now recall the result. We can express the v is equal to v as the r omega. या इस वाली सिचुएशन में v is equal to x into omega. So I will go with dl is equal to dm, v की जगह x into omega, which can be further written. Oh sorry, there is one more x here. v की जगह x omega, there is one more x. अब यहां पे आओ, it is dm x into x. या थोड़ा इसको सजाना चाहूंगा, पहले ओमेगा लिखूंगा, there is no problem. फिर लिखूंगा dm x into x. What is that, my dear? x square. और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज गिवन बाय द रिजल्ट्स लाइक, यू कैन गो फॉर r cross v and you'll find that, if I'm not wrong, along the axis of rotation. अब यहां पे आओ, this is the angular momentum of the small element or the small particle. What's the business? What's the requirement? Angular momentum of the complete body can be calculated by integrating. It is integral dl, it is integral omega, it is dm into x square. और अगर आप देखना चाहोगे बेटा, कहीं पे भी आप एलिमेंट ले लो या कोई भी एलिमेंट ले लो, हर जगह डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम की होगी वो बेटा सेम होगी. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, हे जब आपने इंटीग्रल किया, यू आर इंटीग्रेटिंग व्हाट, यू आर इंटीग्रेटिंग dl, यू आर इंटीग्रेटिंग एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज अ वेक्टर. क्या हमने वेक्टर अलजेब्रा का ख्याल रखा? बिल्कुल. अगर आप यहां पे कोई एलिमेंट लेंगे, यहां पे कोई एलिमेंट लेंगे, आप देखेंगे हर एक एलिमेंट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम एंड इन फैक्ट फ्रॉम द along the axis of rotation. अब यहां पे आओ, इंटीग्रल dl is l, ओमेगा every component of the body, उसके लिए ओमेगा सेम, every component completes equal number of revolutions per unit time or per minute. so ओमेगा को आराम से इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं. you are left with integral dm x square. हमने आपको बोला कि कहीं ना कहीं पे हमें एक रिजल्ट यूज करना होगा, इंटीग्रल dm x square. I'll write it as l is equal to omega. जरा बेटा जब आप इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, कैन यू प्लीज रिकॉल योरसेल्फ व्हाट इज इंटीग्रल dmx स्क्वायर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटीन्यूअस मास सिस्टम. इट इज I या L कैन बी रिटन एज I into omega, which is analogous to linear momentum P is equal to mass times velocity. So कभी अगर आप ये रिजल्ट भूल जाएंगे तो जहन में डेफिनेटली होगा, क्योंकि P ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है. P is called mv, use the analogy, use the comparison. P की जगह L, mass की जगह moment of inertia, V की जगह बेटा आपका omega. So the requirement or the target was derive the relation, show that the angular momentum of a rigid body in rotation is given by I omega. चलिए गुबर हम आगे बढ़ते हैं. Okay, relation between torque and angular momentum. Have a look. There is a possibility कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए as a short or very short answer question. Relation between torque and angular momentum. हमने अभी एक रिजल्ट डिराइव किया बेटा. Angular momentum L can be written as R cross P. That's it. Differentiating both sides with respect to time, तो ये बनेगा
d by dt of L vector is equal to d by dt of R cross P. That's it. यहां से I'll keep it as such. dl upon dt is equal to d by dt of R cross P. We will go with the UV rule or the product rule. That's from the basics of the differentiation. तो मैं पहले R को ऐसे ही रखूंगा. R as such cross d by dt of P vector. Then in the another term, I will keep P vector as such cross d by dt of, that's bad here, R vector. I hope everybody knows how to use product or UV rule. On the left side, no change at all. dl upon dt is equal to, अब यहां पे आओ बेटा, I'll write it as R vector cross, recall the Newton's second law, dp by dt. What is that? That's my people force. ये बेटा आपका force. Then plus P as such cross with dr by dt can be written as velocity. That's it. अब यहां पे देखो बेटा, you express your P vector as mass into velocity. या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं P vector और V vector की डायरेक्शन सेम. Yes my people, from this relation the direction of the linear momentum is same as the direction of the velocity. P vector और V vector की डायरेक्शन सेम. The cross product of the two vectors in the same direction is always zero. तो ये टर्म आपकी जीरो बनेगी. You will end with my people dl upon dt is equal. बेटा R cross F अभी हमने देखा, that is nothing but the torque. So this is the relation जो हमें derive करनी थी. You express your tau torque vector as dl upon dt, which is analogous to F is equal to dp upon dt. Not the big issue for you people. Newton's second law जो आपने already पढ़ा है. So when you talk about relation between the torque and angular momentum, the relation is simple. Tau vector is equal to dl upon dt. That is torque is equal to rate of change of angular momentum. चलिए बेटा, law of conservation of angular momentum, truly remarkable principle. जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, व्हेन इट कम्स द बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आप मुझे बोलेंगे सर अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, हाउ यू विल स्टार्ट, तो मैं पहला पॉइंट यहां पे लिखूंगा, वी आर हैविंग द फोर कंजर्वेटिव लॉज इन फिजिक्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा आपने. दिस इज गोइंग टू बी द नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप बार बार पढ़ते हो. And there is one more जो आपके 12th class का हिस्सा है, law of conservation of charge. So I will say as a first point, it is one of the conservative laws in physics. It is one of the conservative laws in physics. अब देखो स्टेटमेंट क्या है. The statement is very simple. If the net external torque on a system is what? Zero, then its angular momentum that remains constant or conserved. जैसे आपने बोला होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, जस्ट लाइक इफ tau, that is the net external torque. आप देख सकते हैं मैंने यहां पे वेक्टर नोटेशन को यूज किया. इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो रहेगा बेटा कांस्टेंट. अब यहां से आपको क्या क्या एक्सट्रैक्ट मिल सकते हैं. वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट यू कैन हैव, इवन इफ मैं इसका छोटा सा प्रूफ भी देने वाला हूं, वेरी सिंपल, वेरी फंडामेंटल. व्हाट इज इट? एक रिजल्ट आपको ये मिलेगा, वी एक्सप्रेस द एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. अब देखो बेटा, once you know that there is no torque acting on the body, yeah, the net torque acting on the system is zero, you can write down L is constant, L itself is I omega is equal to, yeah, is simply constant. और इसका एक important extract आपके लिए होगा, I1 omega 1 can be written as I2 omega 2. ये आपके लिए बहुत fruitful होगा when it comes to questions based on conservation of angular momentum. Likewise, in fact वो मैं एप्लीकेशन पार्ट में लूंगा, केपलर्स थर्ड लॉ में यूज होता है आपका ये. अच्छा, आई वाज सेइंग अ लिटिल और सिंपल प्रूफ. व्हाट इज दैट? अभी हमने
एक रिलेशन देखी, दैट वी एक्सप्रेस द टाउ एज dl अपॉन वी विल से द dt. अब यहां पे आओ, if टाउ इज इक्वल टू 0, अगर टाउ बेटा 0 है, टाउ खुद है बराबर dl by dt के, so I can write here dl upon dt is equal to 0. If the differentiation of L vector is 0, then L has to be what? Constant. So I can say L vector has to be, I will say, the constant. So I can draw the conclusion from here. As long as the net torque on a system is 0, uska angular momentum constant ya conserve rahega. Yeah, I can have the statement also like this. If you want to modify, if you want to change the angular momentum, there is the requirement of external torque. चलिए बेटा, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस. देयर इज वन, शायद मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी कुछ देर में दिखाऊंगा, बट हियर वी गो विथ नंबर 1, फोल्डिंग और स्प्रेडिंग आर्म्स. ये मैंने जस्ट एज अ हिंट अपने लिए लिखा है, बट वी कैन मेक इट क्लियर. आई विल बी हैविंग द टू वी कैन से ओरिएंटेशंस, या अपने आर्म्स की ओरिएंटेशन. सपोज बेटा मैं किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे हूं. इन वन केस आई एम स्प्रेडिंग माई आर्म्स, देन माई डियर I'm rotating with some angular speed and I'm having some moment of inertia. Now what I'm going to do, during my motion, I will shift my arms. मैं arms को shift करूँगा, fold करूँगा, close जाऊँगा. Can you please tell me what will happen with the moment of inertia? I think हर एक का आंसर होगा कि सर आपका moment of inertia अब कम होगा. Why so? हमने देखा moment of inertia जो है that depends on mass distribution. और इस बार आपने क्या किया, आपने जो आपकी arms का mass है, in fact अगर मैं हाथों में कुछ वजन भी रखूंगा, that will make some good difference. तो जब मैंने arms को separate करके रखा था, they were having some reasonable, appreciable distance from the axis of rotation. Once I am folding it, my people, moment of inertia जो है वो कम होगा, because now the mass is close to the axis of rotation. लेकिन for based on the conservation of angular momentum, I omega जो है that must remain constant or conserved. सर जब आपका I fall हो गया तो ओमेगा को डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए. आई कैन मेक द कंक्लूजन, इन दिस ओरिएंटेशन मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर स्पीड कम. लेकिन वंस मैं इनको फोल्ड करूंगा बेटा, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर स्पीड बढ़ेगी. बेस्ड ऑन माय डियर, आई विल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देयर इज वन मोर एप्लीकेशन, केपलर्स थर्ड लॉ. ग्रेविटेशन में भी आपको इसका सामना होगा. हैव अ लुक माय पीपल, व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? द एरियल वेलोसिटी which can be written as dA upon dt for a planet is what? Constant. फिर जब आप इसका प्रूफ लेते हो, डेफिनेटली यू विल सी दैट इन द चैप्टर ग्रेविटेशन, और पूछा भी जा सकता है, तो आपको वहां पे यही एरियल वेलोसिटी मिलती है बराबर बेटा L upon 2m. 2 is just a number, m is the mass of the planet. So for the aerial velocity, that's dA by dt to remain what? Constant. L should be constant. और L कब constant रहता है? when the torque is what? 0. अब यहां पे आओ, suppose this is an elliptical orbit, this is the sun. At some instant, मैं मानूंगा बेटा planet यहां पे है, this is the planet my dear. If we will calculate torque due to gravitational force, तो planet में gravitational force कुछ यूं होगा, this will be the force my dear, and I will draw the R vector. R vector goes like this. What's the angle my people? R vector and F vector, they are in the opposite direction. Theta is 180. If the theta is 180, the torque due to gravitational force will be what? 0. If the torque is 0, the angular momentum is going to remain constant or conserved. And there is one more, duration of day. इसके basis पे मैंने यहाँ पे question design किया है, इससे ज़्यादा clear होगा. जरा question को देखा जाए. If radius of Earth becomes n times, is it present n times its present value without change in mass, then duration of the day becomes. Have a look, my people. Now there are two possibilities. Either अर्थ को कंप्रेस किया जाता है और अर्थ को एक्सपैंड किया जाता है. दोनों केसेस में रेडियस मॉडिफाई होगा. अब यहां पे देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज. So I will write it as I1 omega 1 can be written as I2 omega 2. Further, आपके जहन में होना चाहिए, we express the omega as 2 pi upon t, where t will be the time period, जो कि हर एक के जहन में होना चाहिए.
अब यहां पे आओ इधर, I1. In first case, moment of inertia of the earth treated as the homogeneous solid sphere. So it is given by 2 by 5 m with the r square. And omega 1 की जगह मैं लिखूंगा बेटा 2 pi divided by t. Normal situation में the duration of the day is what? 24 hours is equal to I2. अब यहां पे आओ, moment of inertia, it is still a solid sphere. So it is given by the 2 by 5. As per the questioner, there is no change in the mass. 2 by 5. So mass as such. लेकिन अब जो बेटा आपका रेडियस है, that is n times. So I'll write down रेडियस के बदले nr आएगा with the square. What is that? n square r square. और यहां पे 2 pi as such. अब टाइम पीरियड कुछ और होगा. Let me suppose that is t dash और t prime जो हमें निकालना है. अब यहां पे आइए बेटा 2 by 5 m r square even 2 pi 2 by 5 m r square even 2 pi. The game is over. यहां पे आइए, t dash को यहां पे लाओ. So this is the t dash is equal to 24 को वहां पे लाओ. It is n square times 24. So this will be the duration of the day now. It is n square into 24. चलिए बेटा, I think the last one which we are left with, what is it? Kinetic energy of rotation. आइए बेटा इधर. Suppose we are having the rotating body. ये आपके पास एक rotating body है, and it is rotating with the angular speed, that's my dear omega. We have to go for the kinetic energy of this rigid body in rotation. अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट पे जाना चाहोगे, कभी कभार अगर आप रिजल्ट भूल जाते हो, you will use the analogy. Kinetic energy of translation, everybody knows it, 1 by 2 mv square. Kinetic energy of rotation can be written as 1 by 2 as such. Mass का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा आएगा, दैट्स 1 by 2 i ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द रिजल्ट जो हम डिराइव करने चाह रहे हैं. अब देखिएगा बेटा, हमारा अप्रोच इसमें क्या रहेगा. एक छोटा सा एलिमेंट में यहां पे पिक करूंगा. A body is in rotation, so therefore the path followed by its element will be simply, my dear, what? Circular. And suppose बेटा इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो v है, और इस एलिमेंट का जो सर्कल है उसका रेडियस में मानूंगा बेटा I will say the x. And further इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो हम मानेंगे dm. अगर हम बात करेंगे the kinetic energy of this small element, I will represent that by the symbol dk. That will be given by 1 by 2, इसका मास है dm और इसकी वेलोसिटी जो है that is simply given by the v square. Further I will go with it as dk is equal to 1 by 2 dm, v is equal to r omega. We know it very well. अब इसका रेडियस जो है वो x है, it is x, और साथ में आपका आएगा ओमेगा. ओके, साथ में स्क्वायर भी है क्योंकि v का स्क्वायर है, सो इट विल बी द x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर. जरा बेटा हाउ टू गो फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, और इस बार हम ज्यादा खुश हैं बिकॉज आई एम इंटीग्रेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी. टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशन. इट इज इंटीग्रल 1 by 2, साथ में आपका dm, या थोड़ा इसको रीअरेंज करूंगा. आई एम हैप्पी विथ, पहले 1 by 2 लिखूंगा, फिर ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, फिर यहां पे आइए बेटा यू आर लेफ्ट विथ dm और x स्क्वायर. जरा फाइनल रिजल्ट की तरफ भागते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड integral dk, that is k, that is the kinetic energy of this complete rigid body in rotation. 1 by 2 is constant, इंटीग्रल से बाहर ओमेगा, हर कंपोनेंट के लिए ओमेगा सेम, तो ओमेगा स्क्वायर भी बाहर. यू आर लेफ्ट विथ इंटीग्रल dm x स्क्वायर. हमने आपको बोला while dealing with the moment of inertia of the continuous mass distribution कि हमें रिजल्ट काम आएगा. यू कैन सी माय पीपल k is equal to 1 by 2, यहां पे ओमेगा स्क्वायर. बेटा इंटीग्रल dm x स्क्वायर is simply the moment of inertia, और I can rearrange it a little bit. It is 1 upon 2, साथ में I with the omega square. So this was from the chapter rotational motion. This is going to be more than sufficient. अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और नोट्स भी आपने बनाए होंगे, और यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बतौर नोट हम लेना चाहेंगे, this is going to be very fruitful and we don't expect कि इससे बाहर आपको कुछ पूछा जा सकता है. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा. हाँ, रोलिंग शायद अगर कभी कभी पूछा गया है, बट रोलिंग पार्ट आपका डिलीट हो चुका है. थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.